Good evening from Delhi. Hello everyone and welcome to Rajinder Da Dhaba. So this is in a place called as Safdarjung, and this is one of the most famous dhabas in Delhi. आगे तक देख के आओ, सारा कुछ इन्हीं का ही है। हाँ, आगे तक पूरा इनका ही है। Let's take a look at what is happening around the back side. काउंटर नंबर 4 ये तवा वाला है सारा। आगे इनका ग्रेवी सेक्शन है। So they have like different sections around the whole place, and you can place your order online, which is what we have done. और अगर आपको दिखाऊं तो वो जो है ना, आप देख रहे हो सामने 6 नंबर, हाँ उस तरफ वो सारा स्विगी वाला काउंटर है। आगे रोटी वाला सेक्शन है। अच्छा वो वाला? हाँ वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। हाँ So straight ahead is the roti counter, and on my right is the gravy section. अंदर भी दिखा सकते हो, ये लो ये भी चूज कर सकते हो। हाँ हाँ बोल दो उनको। Let's look at the gravy section. So these are the famous Galoti kebabs. With that mask और उसके ऊपर ये करते वैसे लग रहा है आप उसका इंस्पेक्शन कर रहे हो। भैया आपने तो दिल जीत लिया। ये रोटी और ले आओ। Hi Shitij. हेलो। Hi Ramanshi. Hi Bhavit. Hello. मुझे नहीं पता। Delhi's famous onion and chutney. फोटो लेते हैं।
Hello, Nitesh. Hi. So after you place your order, you can just go to the counter and print a receipt of your order. नहीं बहुत हो गया सब ज़्यादा हो जाएगा अपने ओके भैया जी ओके तो शुक्रिया Thank you. थैंक यू भैया। अब निकालो सबसे पहले Okay. बिल्कुल भैया, उसके नीचे रुमाली निकाल दो। रायता बोला था नहीं रायता। So once you get your receipt printed, you can hand the receipt to the waiters. They will go to every section, collect the food, and bring it at your table. बीच में रखो ना इसको एक सेकंड। मर्ज भाई दिस इज मक्खन रोटी। हाँ This is our rumali roti. लाश की तरह क्यों उठा रहे हो? चूहे की लाश किसी कोने में तो पड़ी है Let's have a try at the famous Giloti kebabs. They are so soft, they're literally breaking up. इनको मजनू का डिनर लेके जाना है। हाँ मैं आज वही बोला था मैं बहुत मजा आवा है।